All right, and as my colleague was telling me, Yogi Adityanath was in the vicinity. He had conducted an aerial survey of this area earlier in the morning as well. And now, within minutes of this incident taking place, you can see the Chief Minister of UP right there at the spot. You can see a very animated person who seems to be narrating what had happened. We'll try and see if we can find out what was he trying to communicate over there. But within minutes, as we have learned from the district magistrate, from the ADG, from the DCP of fire services, they had rushed 10 to 15 fire tenders on the spot. The fire broke out in a tent that was not of an akhada, but it belonged to Geeta Press. From Gorakhpur. It is a legacy printing press from Gorakhpur. It is known for printing religious stuff. One of the cylinders caught fire, leading to two other cylinders that were adjacent to it also exploding, leading to huge flames that you can see still. These are earlier pictures on the left-hand side of your screens. The fire tenders reached the spot, doused the flames, evacuated whosoever was there inside. There are no casualties so far. Still, there is scanning taking place of the area inside the tent for anything else of significance that could have been found. My colleague Rishabh now joins us. Rishabh, tell us more about Chief Minister's visit. Doused the flames, evacuated whoever was there inside. There are no casualties so far. Still, there is scanning taking place of the area inside the tent for anything else of significance that could have been found. My colleague Rishabh now joins us. Rishabh, tell us more about taking place. Well, if you see, Priya, we are still here at the fire site, and fire has been doused off, is what we are given to understand. This was an area which was sort of akhada, but it belonged to Gorakhpur Geeta Press. Sadly, we were supposed to do a story on same Geeta Press later in the evening about what their idea of Mahakumbh is and how they are going to take it forward, and what Geeta Press plans to achieve and how their outreach would be in this whole Kumbh, given that Prime Minister had given extra attention to Geeta Press as well earlier last year. We were supposed to be here later in the evening, but now what you're seeing on your screens is this exactly, the area that is just remains, the ruins of the akhada, the Geeta Press akhada, here in Sector 19 of Sangam Ghat and around Sangam Ghat. And this, I'll ask my camera person to show you, the area this is very close to the river, the Ganga River, and that's the reason that at least on one side of this camp there was no establishment, and that actually helped the officials here to concentrate on the focal point, and the was doused. The main, the attention from the officers here, the authorities here, was to ensure that the fire do not go further, move further to other akharas as well. The other akharas were first evacuated with the word go, and then, while the fire was being doused, all the akharas were checked, all the inflammable substances were removed, and it was ensured that no fire moved toward other akharas. Because if you see around this, I'll ask my camera person to give you a top angle view of this area. If you see around this, you'll see a heavily populated akhara. This is Sector 19, and we have been crisscrossing these areas for last 10-12 days now. These are the areas where you'll find a lot of international devotees as well, and these are the areas where you'll see the Pilot Baba Ashram, or for that matter, other such areas as well, where are a lot of visitors and inquisitive visitors day in and day out. And now, this whole area has been evacuated. Now the authorities are ensuring that everything is brought under control. The ADG of UP Police and DCP of UP Fire Services, who are in charge here, have both confirmed to Times Now that the fire has been doused. No casualty has been reported, and this is on record. Right, we've got multiple official reactions coming in from the spot. My colleague Rishabh had also earlier spoken to
various officials who were there. There was DCP of the fire services who was there. There was ADG Bhanu Bhaskar who came out and said that everything is under control. There is no need to worry or panic or be concerned about. What they are doing right now is focusing on evacuation. Remember, this was a tent of Geeta Press which had several people inside. One of the officials had said it could be 30 to 40 people, but they cannot give a definitive figure because it is a floating population. A lot of people keep moving around depending on the schedule of the day. Since there were cylinders there might be some food that was being cooked over there. There could have been people who could have come there to have a meal, and which is why to give an exact figure will be difficult. हो जाए यहाँ पे कोई ऐसी अगर ज्वलनशील चीज है तो वो हट जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है और बाकी आप लोगों को बताइए। Around 15 fire brigades, they came to the spot. We had received the information at around 4:08 and we reached at around 4:12, 4:13, and by 4:30 we had controlled the fire. CM Yogi Adityanath has also reached the spot. He has monitored out the situation ongoing here, sir. Yes, Honorable CM had come to this location and he has reviewed the whole situation, and we are all senior officers are present here. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Please, okay. आज कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी और तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। Rishabh, the sanitization process was underway. Can you give us an update on that? Is there anything else, any other inflammable material that has perhaps been found? And how much time will it take to clear the area? Sanitization process was underway. Can you give us an update on that? As the inflammable material that has perhaps how much time will it take to clear the area? Right, one can understand the chaos that might be there on the ground right now, even though top officials are there. Our colleagues are there trying to get you first-hand accounts of what might have happened. We also spoke to several eyewitnesses, several saints who were present there at that time when the fire broke out. They told us that once they saw the flames raging, they left. They didn't bother to collect their belongings. They were all consumed by fire. जी किस तरीके से आग लगी और आपको कितनी देर के बाद ये जानकारी हुई? बस तुरंत ही आग पकड़ लिया, सिलेंडर फटा और आग पकड़ लिया तो पता चला कि आग लग गई पूरे तंबुओं में। हाँ। तेल घी रखा हुआ था सब और नीचे वो घास बिछाया होता है तो आग पकड़ लिया जल्दी से। फिर किस तरीके से भागना पड़ा आप लोगों को? बस वही से भागे और एक दूसरे को मदद करके तंबू में से सब सामान बाहर निकालने लगे। जितना निकला उतना निकाला, बाकी सब जल गया। हाँ। कहाँ से महाराज जी आप आए हैं और कितना कुछ सामान? हम गुजरात से आए, जुना अखाड़े से, देवगिरी हमारा नाम है। अच्छा, कितने लोग लगभग महाराज जी वहाँ पर होंगे जहाँ पे आग लगी? Chief Fire Officer Pramod Sharma, sir, thank you for joining us. We know it would have been very hectic for you. Sir, please give us a detail of the sequence of events. What time did you get the first call? जैसे धुआं दिखाई दिया पूरी टीमें हमारी ऑन ग्राउंड पहुंच गई थी और जो साधु संत यहाँ पे थे उनको इवैक्यूएट कराया गया तत्काल प्रभाव से। उसमें फर्स्ट इवैक्यूएशन ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो, उसके बाद एरिया का कंट्रोल Is what the authorities here have confirmed to them now. All right, the audio line seems to be very poor, but what he was saying was that within minutes of getting the first information, fire tenders were rushed to the spot. The people on the ground are saying that it took merely 3 minutes for the fire tenders, between 10 to 15 fire tenders of the UP Fire Services to reach the spot. 4:08 was precisely when the cops were intimated about a fire breaking out in Sector 19 of the Mahakumbh area. Within 3 minutes, it took just 3 minutes for the fire tenders to reach the spot and douse the flames. And quickly, everybody who was in charge of the situation on ground to take care that everything happens smoothly reached there, from fire services to other departments, top cops to Chief Minister himself.
and everything is said to be under control. Rishabh, you were giving us an update on how the sanitization process is coming about. So, Priya, you can see here now that, senior officials have started taking the final roundup here at the fire site to declare it fire-free right now. I'm asking my camera person to also start walking in with me to give you an on-ground situation here. Let's try and talk to a few people here and understand whether they were here or not when the fire began. Let's try and talk to a few people here. सर, आप यहाँ पे थे जब आग लगी? क्या हुआ था वहाँ पे? यहाँ पे जब मैं आया देखा जो है, क्योंकि गंगा जी के किनारे आया था और एकाएक अचानक आग बढ़ी और बढ़ने के बाद एक टेंट से दूसरे टेंट और पूरे परिसर को, पूरे कैंपस को आग अपने उसमें ले ली और पूरा पैंसर धू-धू करके जलने लगा जो है। तो जब कितने देर में फायर सर्विसेज पहुंची थी? फायर सर्विस 5 मिनट के अंदर बहुत तेजी से, मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कहूंगा प्रशासन का, फायर सर्विस का। बहुत तेजी से फायर सर्विस आई और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। जो आम जनमानस के लोग, जो श्रद्धालु थे, उन्होंने भी सहयोग किया और जितने भी ये बगल के टेंट थे उनमें लोगों को बाहर किया और वहाँ के जो सिलेंडर थे अंदर रखे हुए, एक एक सिलेंडर को निकाल के हम लोगों ने बाहर कराया और जितना भी प्रयास हो सका बगल के कैंपस में आग ना पहुंचे। आप इसी कैंप में थे? इस कैंप में नहीं थे, मैं पड़ोस के कैंप में था, लेकिन प्रयास मेरा था कि अब क्योंकि ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग था, बैरिकेडिंग होने के कारण भी आग बाहर नहीं पहुंच पाई। जी, बैरिकेडिंग होने के कारण भी आग बाहर नहीं पहुंच पाई। ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि जिस तरीके से यहाँ पे कई मुझे 15 मिनट 16 मिनट बाद भी एक सिलेंडर फटने की आवाज आई है, कितनी ऐसी सिलेंडर की आवाज आपने सुनी? मेरे अपने संज्ञान में, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और कम से कम 5 सिलेंडर यहाँ पे फटे थे। हमारी टीम ने भी 2 से 3 तो हमने भी यहाँ पे सुने हैं जब हम यहाँ पहुंचे। 5 सिलेंडर फटे हैं यहाँ पे, 5 सिलेंडर। कोई हताहत होने की खबर नहीं? भगवान ऊपर माँ गंगा की कृपा है, किसी प्रकार के जो है हताहत होने की खबर नहीं है, किसी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं है। So you heard it here. This is an eyewitness account that you are getting. This is an eyewitness account which you have just heard. The gentleman was here. He was one of those first responders. He's telling us that at least 5 explosions of cylinder that he has heard. 3 of them we can confirm that we have also heard when we reached the spot here. We also reached somewhere around 4:15, 15 minutes into the fire when we saw the flame. The flames were quite high. We were on the other side of this ghat and of other side of Sangam toward the Yamuna Ghat when the first flames happened, and we could see the smoke from the other side. That's when we started rushing to this area, and that's when by the time we reached, we could see the flames still on. So I'm talking about a good 20 minutes of flame. The fire services were quick. They were here within 5 minutes is what the eyewitnesses are saying. This is what the authorities have also confirmed, that the first fire tender was on spot within 5 minutes of the fire being reported. As of now, there hasn't been any casualty. There hasn't been any report of any casualty from this, and that in a way is also very, very remarkable, that the way the area is crowded, and with the amount of flame that we have seen, we have witnessed, and the way cylinders have exploded, 0 casualty again is a miracle here, and the authorities should be commended for the way they have doused down this fire in this short period. This investigation is currently underway as to what really could have caused that cylinder to burst, but this is a Mahakumbh area which is going to go on for another 40 odd days, and there will be multiple tents where there will be cylinders, where food will be cooked for millions of people day in, day out, every day till this largest congregation ends. Are there any bigger lessons to be learned from what happened today? Is the administration now doing a check of other tents as well in order to prevent any such repetition in future?
largest congregation and others what happened now doing a check of other things as well to prevent any such repetition. Well, definitely, this is an eye-opener. What could have led to the fire? That is, that pertains to investigation that will only come out after the investigation. Clearly showcases that what exactly went wrong. But since morning, and for that matter, we have been hearing this for last 1 week, that how there have been multiple requests from the authorities here that all the kitchens, all the bhandaras, all the akhadas should use we have been asked to leave this spot right now. We'll walk out as we're talking. All the authorities have been asking that if you're procuring cylinders, if you're procuring LPG cylinders, procure it from the right place, from the authorized centers. Do not buy it from a third party that could lead to disasters or incidents. And one such incident has taken place, whether it was because of faulty cylinder, whether it was because of something else, that all remains to be seen. The authorities definitely will bring in some check and balance here to ensure that no such thing happened today. Thankfully, there hasn't been any loss of life. But having said that, what you're seeing on your screen is definitely horrific. The situation here is definitely something that will give nightmares to the authorities, given that we are talking about an estimate of 40 crore people visiting Kumbh in the 45 days. Remember, we are in only the 7th day of Kumbh. Yes. The morning. But it could also be an assurance, Rishabh, because the way the authorities have reacted, the way things were brought under control, and perhaps lessons to be learned as they should be learned in order to make this process even more efficient and foolproof as well as safe for those attending. My colleague Manish Yadav is also with us. Manish, आपने वहाँ पे लोगों से बात की है, जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि डरिए मत, कुछ अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए. लोगों की क्या भावना है? क्या वो संतुष्ट हैं जो रिएक्शन हुआ है उससे, या उनको कोई शिकायतें हैं सरकार से? योगी जी भी आए हैं, वो स्क्रीन पर एक बुजुर्ग आदमी दिख रहे हैं, वो लग रहा है कि कुछ शिकायत कर रहे हैं. क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? देखिए, मैं बात कर लेता हूँ. मिर्जापुर के रहने वाले हैं, जहां आग लगी उसकी कुटिया नंबर 30 में वो रह रहे थे. क्या शुभ नाम है आपका? श्रीकांत पांडे. अच्छा पांडे जी, क्या हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ? ऐसा हम लोग लेटे हुए थे, 3 लोग लेटे हुए थे, तो एकाएक आवाज तर की सुनाई पड़ी. तो ये हुआ क्या मामला है, बाहर निकला गया तो आग लग गई. चूंकि आग माने धुआं दिखाई पड़ा तो आग लग गई. तो यह माने निकलिए भागिए. तो एक आग बैग तो हम लेके भागे, और हमारी मिसेज थी और हमारी साली थी, तो हम लोग 3 लोग फिर बाहर भागे. अच्छा, सारे लोग माने यहाँ पे भी माने ये कि माने बस भागिए. तो लोग भाग करके, हमारी गाड़ी थी ग्रैंड विटारा, तो वो वहाँ पे खड़ी थी जहाँ आग लगी थी. तो वो अब जो भी रहा हो हम नहीं जानते. गाड़ी सुरक्षित है? हाँ, गाड़ी मैंने वो चूंकि लाख थी गाड़ी, तो वो शीशा, ड्राइविंग सीट वाला शीशा तोड़ करके गाड़ी पीछे कर दिए थे. तो हम दौड़ के गए गाड़ी देखने के लिए. पुलिसकर्मी फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंचे? अब ये तो फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ ऑलरेडी रहती थी. अच्छा. शुरू से माने हम लोग एक तैनात थी यहाँ पे. तो ये अब हम लोग भागने के चक्कर में थे, तब तक वो गाड़ी गई और गाड़ी 1-2 गाड़ी आनी शुरू हुई. मुख्यमंत्री जी मिले आपसे? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो भी नहीं मिले. अभी आए, उन्होंने दौरा किया यहाँ का? अब पता नहीं, हमको नहीं मालूम, हमसे मुलाकात नहीं हुई. अच्छा. हाँ. तो प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि समय रहते आग पे काबू पा लिया, कोई जनहानि नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है. जनहानि तो माल चाहे जो भी जला हो, जैसे जो भी है, तो सभी का जल गया. जो निकाल पाए हैं ठीक है, निकल पाए हैं. जो इधर साइड में थे, क्योंकि आग उधर लगी थी, हम लोग इसमें थे, 30 नंबर में थे. अच्छा, 30 नंबर कुटिया जो पीछे? हाँ. अच्छा, इस रो में. कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे रहने को तो 250-300 लोग थे लगभग. 80 कुटिया बनी हुई थी? 80 कुटिया तो ऐसे थी ये. अच्छा. 10-12 कुटिया वैसे थी. नहीं, 80 नहीं, 120 कुटिया रही होंगी. 120. आप भी यहीं पे थी? 250 कुटिया थी. आप कहाँ की रहने वाली, जरा कैमरे? मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, ऋषिकेश. अच्छा. मैं रह रही थी, अभी आई हूँ 12 तारीख को, और आज एक झोपड़ी में आग लगी, फिर सब में
देखते देखते। तब आप क्या कर रही थी जब ये आपको पता चला? मेरे चोट लगी तब मैं ठीक कराने अंदर बैठी थी। मैंने सोचा नहीं निकाले सामान, फिर सब निकाले नहीं और सब सामान निकालो तो हमने निकाला अपना। अच्छा। थोड़ा बहुत निकाला, थोड़ा अंदर रहने दिया। जैसे निकालने लगे तो लोगों ने खींच लिया कि सामान को जाने दो, आप बाहर निकलो। अच्छा, तो अभी प्रशासन ने एकदम एक्शन लिया और बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया। हाँ जी। कोई दिक्कत प्रशासन से, परेशानी? नहीं नहीं, प्रशासन से कोई तकलीफ। प्रशासन ने थोड़ा आगे आ जाइए, चूंकि ये गाड़ी निकल रही है, सावधानी बहुत जरूरी है। फायर ब्रिगेड बहुत फटाफट आ गई, सबने बहुत सहायता करी, पर आग ने बहुत विशाल रूप ले रखा था। झोंपड़े होने की फटाफट फूस के बने थे इसके चलते। हाँ जी। मुख्यमंत्री ने अभी दौरा किया और अधिकारियों को कहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। हाँ जी, सुना है, आए थे। मैं मुलाकात हुई, आपसे पूछा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो देखिए, ये लोग हैं जो इस घटना में शामिल, जो पीड़ित है, जिनकी कुटिया में आग लगी, वो कल्पवासी हैं। कोई मिर्जापुर से आया है, कोई जोधपुर का रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर देखेंगे पूरा जो एरिया है आपको वो जलकर राख हुआ साफ नजर आएगा। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो हैं, अभी पुलिस प्रशासन के अफसर मौजूद है। मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर कैंप को दोबारा से लगाया जाए, उसके लिए साफ सफाई अभियान चलाया जाए ताकि कल वासियों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये पहली कोशिश। आप 40 नंबर में रह रहे थे? हाँ, 40 नंबर में। अच्छा, क्या क्या सामान? आप ऐसे सामान लेकर जा रहे हैं? आप भी रह रहे थे यहाँ पे? जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? उन्होंने रास्ता बनाया जहाँ पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर? यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी थी। थैंक यू सर। धन्यवाद। Everything is under control. People are safe. Sanitization is taking place. Time now for us to take a very quick break. But unfortunately, on the other side, we'll tell you how politics has already started. How Samajwadi Party was very quick to say that Sari Vyavastha Ram Bharose hai, even when everything was brought under control within minutes. And that is not something that the administration or the politicians of the ruling party are saying. You heard the people themselves saying how they were very impressed with the quick response. More details on the other side.